1 hour. 1 Okay. hour means 2:30 to 3:30 was the time, no? Yes, I sir. will Yes, finish sir. in. Sir, Yeah, yeah, you yeah. can go up to 3:45 because we are starting Okay. late. No So, problem, no problem. Yeah, I okay. will manage. Yeah. Okay, ma'am, can you please introduce the sir? Thank you, Janet ma'am. So today we have a very eminent speaker, I can say, Dr. Girjesh Singh Mehra. He's working as ARS scientist at Division of Agriculture Extension, ICR, Indian Agricultural Research Institute, New Delhi. His core area of specialization are agriculture extension, ICT, and communication. He has published more than 25 research papers, 30 articles, 25 books, and training manuals. He has awarded with Vice Chancellor Gold Medal and Ram Shiromani Tiwari Award for Best Graduating Student from GB Pantnagar University and Binani Gold Medal during his post graduation from Banaras Hindu University. He has also won six Best Presentation Award and Young Scientist Award as well as Best Researchers Award also. He is professionally a motivational speaker and academic YouTuber. Recently, he has authored Extension Education Ready Renoker book. So we are most welcome, sir, to this 21-day training program, and we are eagerly waiting for your lecture. So over to you, sir. Thank you so much, ma'am. First of all, let me thanks the coordinator, especially Dr. Pragya madam, for giving me this wonderful opportunity. And sorry for I joined 15 minutes late, as I have to pick my son from the school personally and drop him to home. So participants are joining, ma'am. Let's wait for half a minute just. Let's all join, then we will start. Maybe there may be more than 100 participants now, so it take time. Ah, Continuously, they in between join. yeah. Just half a minute we will give, and then we will Sure, start. sure, sure. We are not seeing your screen as such. Yeah. I have just I have shared. I'm ready with my presentation. I will share it. So let's start, ma'am. So good afternoon, dear participants. I hope my slides are visible to you and I am audible also. Yes. Okay, great. So let's start this small session with you. And it's very important. It's a very important session to understand what are the important communication skills and multimedia usage for effective presentation. We all are professionals. We all are engaged in giving effective presentations. So what are the important communication skills we should take care of while making our presentation, and what are the different multimedia, how we can should use this PowerPoint presentation, how we should make it very attractive so that our communication become effective. So before going ahead, let's have a small think on this point thinking on this point. Do we need a smart classroom or smart teachers? What is your opinion? Anyone want to share? Do we need smart classrooms or smart teachers? You can Ma'am, write in the chat box. ma'am, they can unmute and they can give feedback also in between. Yeah. Sure, Ah, sure. so any participant, any trainee want to share anything? We need smart classroom or smart teachers. What is your opinion? Just one or two participants in a brief, in very brief. Smart classroom versus smart teachers. Any would like to share? Because I saw your course. It's in teaching, learning, evaluation technology program, na? So smart classroom everywhere now it is being built. Participants, you Ah, you, you are unmuted. Please answer this, sir. yes, please.
Anyone the want to billing share? conditions Smart both are classroom or needed, sir. smart teachers? Both are important, yes, and both have their respective places. And a smart classroom cannot substitute smart teachers, but yes, smart teachers can utilize smart classroom in a very effective way. So, can you identify this person? Anyone? Anyone is able to identify this person? This great personality, great researcher, great scientist, great teacher. कोई पहचान पा रहे हैं? Anyone? Anyone would like to try? Who is this person? It's C.V. Raman, sir. Yes, yes, very good. He is C.V. Raman, and why I have put this photograph? C.V. Raman has done a lot of research, and at that time when smart classrooms are not there, when multimedia was not there, you can see the blackboard and his handwriting, how he has wonderfully used that blackboard. And if you remember your graduation days, then you will find that there are many teachers who just use blackboard and chalk, and they create miracle in class, and they make their communication so effective, so powerful, that every student wants to join their classes. So this is a perfect example. Dr. C.V. Raman, you can see the photographs of Dr. Sarupalli Radhakrishnan ji also. They have used blackboard in a very effective way, and no uses of multimedia, but still they were very effective in their communication. So there are certain characteristics which teachers needs, which a communicator needs from communication point of view, which we will discuss in this class. What makes a teacher effective? Any one or two points you want to give? What are the characteristics or what are the traits which makes a teacher or a communicator effective in terms of communication? Anyone? What are the traits? What are the characteristics which makes a teacher effective or a communicator effective? Feel free to communicate in this class. Any opinion is coming in your mind, you can share, please. Two-way communication, discussion. Two-way communication, very good. Discussion, excellent, excellent. So you can see a teacher or a communicator becomes effective when he or she has a wonderful personality, subject knowledge. Yes, it is The the sound is not prerequisite. clear. Sound is not clear. Other participant? It's clear. Check yours. Acha. It's okay. It's It right. may be internet connectivity problem with those who is saying na sound is not clear. So personality. One thing is personality. Their voice Other not thing is clear. subject knowledge. Third thing is empathy. Ma'am, voice is not clear. सतीश जी आपका वॉइस चेक करें, आपका नेटवर्क इशू है आई थिंक ना. हाँ, हमारा तो इंटरनेट बहुत अच्छा है यहाँ IRI में, और मुझे लग रहा है मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है क्लियरली. Yes, sir. ठीक है, तो पर्सनैलिटी एक पार्ट है, देन सब्जेक्ट नॉलेज, एंड द थर्ड वन इज एम्पैथी. Empathy in communication is very important. I will tell later on what is empathy and what is sympathy. Empathy and sympathy are two parts of in communication. So sympathy is if suppose I am going in a car and I saw a beggar. एक छोटे बच्चे को मैंने भीख मांगते हुए देखा और मेरा हृदय एकदम वो हो गया, पिघल गया, and I was full of sorrow and I gave 10 rupees and then I moved on, and when I moved on I forgot about the child. This is sympathy. Empathy is when I saw a child begging, and in my life I decided to do something and I did something for them. That is empathy. That's why a teacher should have empathy. When a communicator see his audience that there is some problem with his audience, then that empathetic teacher tries to communicate with that student and change him around. There are many historical examples I will give later on this class. Then communication, effective communication skills are the key of successful teachers or communicators. And of course, the pedagogy, how you are utilizing your tools, what is your teaching methodology, that's all makes a teacher effective. So there is another characteristics: the mediocre teacher tells, the good teacher explains, the superior teacher demonstrates, the great teacher inspires. So in your life, you remember your school days, you will not able to remember those teachers who have taught extraordinarily, Sir, but you please check will the able to sound. remember those teachers who have inspired. Madam, my voice is not coming clear. Satish ji, you just first log out from this meeting and then again join it.
it will be might be clear at that time. Otherwise, So ma'am, my voice is please clear to all, continue. na? This problem will be only of one. Yes, sir. Yes, sir. Please These ignore are the this demerits of participant because all. No, no, no problem, ma'am. Yeah. this So the may be the great, problem on his side. yes, 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 I can understand. This is He the can. drawback of this Uh, online classes ना. कोई नहीं, connectivity है. तो सर एक बार join कर लीजिए, जैसा मैम कह रही है, एक बार try कर लीजिए, please. है ना? तो great teacher inspire Otherwise, करते sir, हैं. do one thing. You can later on watch this session on YouTube if you still face the same issue. Yeah, yeah. If it's in going into YouTube, then you can anyway, anytime you can log in and see that class. Yeah. So the great teacher inspires your life. So down the lane in our school time, also we today remember those teachers who has inspired us to do something. So this is all inspiring people is the characteristics of effective teacher. So this is very important to note. Subject knowledge हर किसी को पता रहता है. Subject knowledge आपको पता है तभी आप टीचर बने, साइंटिस्ट बने, प्रोफेसर बने, कम्युनिकेटर बन रहे हैं. राइट लेकिन उस सब्जेक्ट मैटर को कैसे समझाना है उस सब्जेक्ट मैटर को कैसे दूसरों के सामने रखना है सो दैट योर कम्युनिकेशन बिकम्स इफेक्टिव दिस इज इंपॉर्टेंट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट right so what is the first thing which is tried suppose we can take one example suppose a student gets a chance that in front of 1000 people he has to give a speech and great scientists are going to listen in 1000 students, staff, professors will going to listen in. So what will be the first thing which strikes in mind? What do you think? Anyone? What will the first thing which comes to that student mind? क्या आएगा उस विद्यार्थी के मन में क्या आएगा उसके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आएगी यदि उसको पब्लिक स्पीकिंग का एक चांस दिया जाए तो सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा आपको क्या लगता है व्हाट डू यू थिंक Language. हाँ लैंग्वेज क्या यूज करूंगा दैट इज कम बिफोर दैट आल्सो समथिंग विल स्ट्राइक इन योर माइंड ना Preparation. preparation how to I will prepare before that also fear will come right it is well researched and it has been researched in psychology that whenever a person is getting a chance of public communication or communicating in front of people so fear will come it's obvious and it's good also because in communication we always respect fear we need fear because adequate amount of fear will not let you to become overconfident ठीक है फियर बहुत जरूरी है डर बहुत जरूरी है ना एक एड भी मुझे याद आ रहा है आपको थोड़ा क्लास को एंटरटेनिंग के वे में करेंगे ताकि आप बोर ना हो एक एड था डर सबका है गला सबका सूखता है ना माउंटेन ड्यू का कोल्ड ड्रिंक का एक एड था तो वो डर सबको लगता है बिफोर स्पीकिंग नो बडी इन दिस अर्थ कैन डेयर टू से दैट आई डू नॉट हैव अ फियर बिफोर गोइंग टू अ पब्लिक अपीयरेंस सबको लगता है बट द वे यू हैंडल योर फियर बट द स्टाइल यू मैनेज योर फियर इज इंपॉर्टेंट राइट so this is the before situation I have put in slide and if your speech goes on if your class goes on and it comes in a wonderful way people appreciated you then yeah, this is the after situation you will be happy सिडनी शेल्डन को कोई जानते हैं सिडनी शेल्डन ये अमेरिकन मूवी डायरेक्टर हैं कम्युनिकेटर हैं बुक्स लिखते हैं इन्होंने एक रिसर्च किया एंड ही फाउंड दैट डेथ इज द नंबर 2 फियर दैट पीपल हैव एंड पब्लिक स्पीकिंग इज द फर्स्ट तो आप देख सकते हैं कितना इंटरेस्टिंग है ये नोट करना कि पब्लिक स्पीकिंग इज द फर्स्ट फियर पीपल हैव एंड डेथ इज द नंबर 2 फियर इतना डरते हैं मंच पे जाते हैं आपने देखोगे यू माइट हैव सीन मेनी स्पीकर्स हु अदरवाइज स्पीक्स वंडरफुल but whenever camera is on or whenever they are in front of 1000 people 200 people 300 people they are not able to speak so this is the situation which happens with one so every eye is watching you when you are communicating, when you are presenting, and your legs are shaking. Many people feel this. Anxiety is there, sweat is there. So this is the situation when you are in a public speaking place and you are presenting. So there are history. If you goes down in the history, you will find great communicators, great presenters who used to speak in a wonderful way and they used to influence people. Swami Vivekananda gave a Chicago address. You have heard that anyone who have heard his speech at Chicago, recorded speech? YouTube में है वो video. Anyone? You know that Swami Vivekananda gave a historical speech in Parliament of Religion at Chicago in 1893? You all know, ना? आप लोग जानते हैं ये fact? Yes, sir. Yes, yes. Right. And कोई मुझे बताएगा स्टार्टिंग लाइन क्या थी उनकी स्पीच की वेरी फेमस स्पीच है हिस्टोरिकल स्पीच है Okay, brother and sisters. हाँ yes sisters and brothers of America right
The way he started wonderful his presentation, and everybody connected with Swami Vivekananda, and that was the time when our India got identity, when Swami Vivekananda described India. Then another great stalwart in terms of communication is Martin Luther King Jr. I have a dream. He gave a historical speech, I have a dream, and he gave a ray of hope to the black people who were fighting for their rights. आप सुनिएगा, ये सारी चीजें आप नोट कीजिए. If you have pen and copy, you can note down Swami Vivekananda's speech of Parliament of Religion, Chicago 1893. Then Martin Luther King Jr.'s speech in 1963, I have a dream. And verbally, when he was communicating with lakhs of people standing in front of him, and when he was saying, oh, I have a dream, one day black people will walk with the white people on the same pavement. Oh, I have a dream. And he literally made people to see the dream by his verbal words. This is the power of communication. This is the power of communication. है ना? अपना माइक प्लीज म्यूट कर लीजिए प्लीज. थोड़ा डिस्टर्बेंसेस हो रहा है. सभी से मेरा अनुरोध है कि माइक म्यूट कर लें, और जहां पर आपको बोलना है तभी अनम्यूट करें. Then another historical speech was given by Mahatma Gandhi ji, Quit India speech in 1942. It's a historical speech. Whenever you will read Swami Vivekananda, Martin Luther King, Mahatma Gandhi ji, Subhash Chandra Bose, these great stalwarts, when you will read their literature and their speeches, you will find one point, that the speeches are very, very simple. They have made in such a way that they can connect each and every person of country. वेरी सिंपल. ऐसा नहीं कि बहुत जार्गन्स या कठिन शब्द इंग्लिश के नहीं भरे उन्होंने, बहुत सरल भाषा में. उनका इंग्लिश लिटरेचर अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सरलता से आपको समझ आएगा. ठीक है, हिंदी पढ़ेंगे बहुत सरलता से समझ आएगी, क्योंकि दे हैव कम्युनिकेटेड टू एक्सप्रेस, नॉट टू इम्प्रेस. इम्प्रेस करना उनका उद्देश्य नहीं था, उनका जीवन का उद्देश्य था एक्सप्रेस करना. That's why these speeches are wonderful, because they are very simple to understand and very attractive. Give me blood and I promise you freedom. तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा. ओज और जोश से भरी हुई बर्मा की 1944 की सुभाष चंद्र बोस की ये कविता, और जो जोश उन्होंने आईएनए के सुबह जवानों में भरा. तो सारे एग्जांपल्स हैं. I have given my favorites. You can have your own favorites. You can see great stalwarts communicating today. You can have your own favorites. But one point is common in them is all are good communicators. They all influence people, right? मैंने कुछ पर्सनालिटीज आपको दिखाई है. एक दो पर्सनालिटी आप ऐड करना चाहेंगे? एनीवन जिनको आप फॉलो करते हो सोशल मीडिया में, सुनते हो? एनीवन यू वांट टू ऐड? बहुत सारी पर्सनालिटीज मैंने दिखाई है आपको. डॉक्टर कलाम. डॉक्टर कलाम, वेरी गुड. मैंने रखा है उनका चित्र, देखिए उनका फोटो रखा है. अमिताभ बच्चन, शिव खेड़ा जी के बगल में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम. वंडरफुल, वंडरफुल. द वे ही यूज्ड टू कनेक्ट विद द स्टूडेंट, यंग माइंड्स एंड गिविंग एन आइडिया. तो बहुत अच्छा कम्युनिकेट करते थे. इसमें मैंने एक चित्र रखा है अटल बिहारी वाजपेयी जी का. पहचान पा रहे हैं बीच में? यस सर. अटल बिहारी वाजपेयी जी का कम्युनिकेशन का स्टाइल बड़ा यूनिक था. और हम कम्युनिकेशन की विधा में, इन अवर कम्युनिकेशन विद द एरिया विच वी ट्रीट एज द बैरियर और द ड्रॉबैक, एक्चुअली अटल बिहारी वाजपेयी जी मेड दैट वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ. आप बता सकते हैं क्या था जिसको हम कम्युनिकेशन के पॉइंट से वीकनेस मानते हैं, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस वीकनेस को स्ट्रेंथ में परिवर्तित कर दिया? व्हाट वाज दैट पॉइंट? क्या था? उनके स्पीच में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था. हाँ बताइए प्लीज, खुल के बताइए. उनकी स्पीच में जनरली आप सुनेंगे, उनकी स्पीच सुनेंगे. यस यस, दैट इज द आंसर आई वाज एक्सपेक्टिंग. पॉज, गैप लेते थे, राइट? अनम्यूट कर लीजिए, मेरी आवाज ही मुझे इको कर रही है अदरवाइज, राइट? वो गैप लेते थे, तो वो पॉज लेते थे, और पूरा देश उस पॉज में सुनता था कि अटल जी अब क्या कहने वाले हैं, बिकॉज ही हैज अ हाई क्रेडिबिलिटी. कम्युनिकेशन में एक कॉन्सेप्ट है क्रेडिबिलिटी, राइट? सो ही हैज अ हाई क्रेडिबिलिटी, दैट्स व्हाई पीपल यूज्ड टू लिसन. जब अटल जी कहते थे मेरे देश में, फिर रुक जाते थे, तो पूरे देश की सांसें थम जाती थी. पूरा देश रुकता था कि अटल जी अब क्या बोले. गरीबी है लेकिन हम उसके लिए कार्य कर रहे हैं, क्योंकि फिर रुक जाते थे अटल जी. So actually he made a barrier in communication, his strength. That was his own beauty of speaking. So every communicator has his own speaking. So today's session, you have to just understand the theory also, and I will give you practical examples also. And I have also some slides how to make your PowerPoint effective, because you all in our life, we deal with multimedia. So how to make that multimedia effective? So communication is a process when two or more person exchange ideas. This is the book's language, but the key word which you should take as a trainee of this course is common understanding.
कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तब तक संचार पूरा नहीं होता, until unless common understanding is there. What is common understanding? So I am communicating you all, you people, and I have something in common. We are common in culture because we all are Indians mostly, and we all have a common, that Indianness together. That is a thread which is keeping tying us together, right? Then also culturally we all are Indians, so we all has a common, more or less a same culture. Then English, you understand English, I also understand English, you understand, most of you understand Hindi, and I also can speak in Hindi. So that is common understanding. So common understanding in terms of language, in terms of culture, in terms of norms, in terms of behavior, in terms of societal development is there, then only we are able to communicate. And that's why communication is a process whenever common understanding is there. So common understanding has to be built. And there are different purposes of communication. We always say Aristotle has persuasion. Aristotle said persuasion, persuade karna. For example, you see the advertisement industry today. ऐड आते हैं ना, तो वो परस्यू करना चाहते हैं, चिल्ड्रंस के लिए ऐड आता है तो चिल्ड्रंस को परस्यू करना चाहते हैं, है ना, बड़ों बच्चों के लिए ऐड आता है, ब्यूटी क्रीम का ऐड आता है, परसुएशन कम्युनिकेशन करना चाहते हैं. लाइकवाइज इन एग्रीकल्चर आल्सो वी ट्राई टू परसुएड फार्मर्स. We have a particular good technology and we want to communicate that technology to farmers. So actually what we want to do, we want to pursue that farmers that yes, the technology which you are using is old, now we have a better option. Persuasion. Perlow said it influence. Influence goes with the leadership capacity. You want to influence your audience, that's why you need good communication skills, right? And there are many others purpose of communication: information, persuasion, entertainment, interpretation, prescription, transmission, and many more. So main communication purpose in academic content, you all are engaged in personal and professional life. So persuasion, you need to persuade your audience, you need to influence your audience while presentation, right? So one communication is very important, which is known as intrapersonal communication. In our life, we communicate with oneself. अपने आप से बात करते हैं. When we are communicating with ourselves, it becomes intrapersonal communication. है ना? सहमत हैं इस बात से? कोई बताएगा मुझे what is interpersonal communication, or you have communicated with yourself in some advent of time? कभी अपने आप से बात करके देखिए आपने? कब करते हैं अपने आप से बात? Anyone? अपने आप से बात की कभी? Have you communicated with yourself? And if yes, when? What are the occasions? Sometimes. Yeah, ma'am, please. Sometimes I question myself हाँ, and sometimes. try to answer. हाँ, तो can you give example? What are the situation like when you communicate with yourself? Suppose deciding whether it is right or wrong. Yes, very good. Whenever you are confused, है ना? Classical example is suppose you have a very good friend और आज दिन में कुछ ऐसी बात हो गई कि कहाँ सुनी हो गई, है ना? Heated argument हो गई. Then when you are going to bed, then you will think. Before sleeping, you will think. यार मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, मैंने ऐसा क्यों कह दिया और उसने ऐसा क्यों कह दिया. आप बहुत सारा एनालिसिस करेंगे. What you are doing actually, you are communicating with yourself. Many people have a habit of writing diary. वो डायरी लिखते हैं, आज मैंने क्या क्या, मेरे टारगेट पूरे हुए या नहीं हुए, अपनी डायरी मेंटेन करते हैं. That is also intrapersonal communication. It's very important in psychology. It is treated as one of the powerful source of motivation. So motivation is also two types: intrinsic motivation and extrinsic motivation. You all have आपने पढ़ा होगा, extension में पढ़ा होगा, motivation की क्लासेस में पढ़ा होगा. Extrinsic motivation and intrinsic motivation. Extrinsic motivation is I want a gold medal at IRI, that's why I am studying hard. मुझे कुछ ऐसा लालच दिख रहा है जीवन का जिसको मैं पाना चाहता हूं, तो मैं मोटिवेटेड हूं, है ना? मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूं सो दैट आई कैन हैव अ पॉम्प एंड पावर इन माय लाइफ, राइट? दूसरा है इंट्रिंसिक मोटिवेशन. इंट्रिंसिक मोटिवेशन कम्स विद हार्ट, दिल से आता है. ये कि मुझे पढ़ना है, मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं सीखना चाहता हूं, इसलिए मन लगा के पढ़ रहा हूं. ये रणछोड़ दास चार्टर्ड वाला कॉन्सेप्ट है. 3 इडियट्स याद अगर आपको मूवी आ रही हो तो, रणछोड़ दास चार्टर्ड हमेशा इंट्रिंसिक मोटिवेटेड था. वो इंजीनियर बनना चाहता था दिल से, इसलिए वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, नौकरी नहीं पाना चाहता था, राइट? So that intrinsic motivation when comes, it is the greatest source of motivation. And intrinsic motivation को enrich करता है आपका intrapersonal communication. When you sit down in a quiet place and you think what you are doing, have you achieved your objectives, what you will do in your life, then it becomes intrapersonal communication. Very important, very important. ये इनको पहचान पा रहे हैं? Personality मैंने आपके लिए PowerPoint में बना रहा था तो मैंने रखी सोच समझ के. Who will tell me who is this personality? Ramakrishna Paramahamsa. Yes. This person
हैज नॉट स्टडीड द फॉर्मल एजुकेशन, इन्होंने कभी स्कूल जाके पढ़ाई नहीं की। और दिस इज द पर्सन हु कन्वर्टेड नरेंद्र नाथ दत्त इनटू स्वामी विवेकानंद। यही थे जिन्होंने नरेंद्र नाथ दत्त, जो इतने टैलेंटेड थे, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया था, जो इतना ज्ञान रखते थे, उसको एक दिशा दी है ऐसे व्यक्ति ने। एक अनपढ़ व्यक्ति ने एक पढ़े लिखे व्यक्ति को जीवन जीने की राह दिखाई। यानी इससे सिद्ध होता है कि देयर आर सर्टेन अदर ट्रेड्स ऑफ लाइफ which makes you effective communicator, which makes you influential in your life। जरूरी नहीं कि डिग्री वाला व्यक्ति ही सबको बदल देगा, एक अनपढ़ व्यक्ति ने कर दिखाया। तो इसीलिए मैंने एग्जांपल रखा कि आप देखें इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में कितनी ताकत। तो आज का जो टेक होम मैसेज यहां पर से निकलता है इतनी स्लाइड से कि एवरीबॉडी टॉक टू योरसेल्फ। दिस इज माय रिक्वेस्ट टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। जीवन में बहुत कुछ चल रहा होता है, बहुत शोर होता है हमारे जीवन में। उस शोर को घटाकर यदि सोते वक्त या सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते वक्त जो भी आपका दिनचर्या है, उस हिसाब से 10 मिनट, मैं ये नहीं कहता हूं आप 15 मिनट 20 मिनट, 10 मिनट भी एक बार एकाग्रता से बैठ के ध्यान पूर्वक बैठे, तो you will see 1 month, 2 month, 3 month change, a positive change in your personality. You will be energetic, you will be motivated। है ना, ये जो शब्द आजकल डिप्रेशन वगैरह सब यंगस्टर्स के बीच में आ गए, ये सब नहीं है। Now coming to the second very important part for you, I am telling you, if you have pen and copy, please note it down. This will help you a lot while making presentations। Effectiveness of communication। बहुत सारा नॉलेज है आपको, आपको सब्जेक्ट मैटर का नॉलेज है, लेकिन आपका कम्युनिकेशन व्हेन इट विल बिकम इफेक्टिव। सो देयर आर 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिवनेस। अगर आप सारी स्लाइड्स जो मैं आज डिस्कस करूंगा आपसे वो सब भूल जाएंगे, लेकिन अगर ये एक स्लाइड याद रखेंगे, केवल एक स्लाइड, देन ऑल्सो यू टेक, यू नोट इट डाउन। आई हैव शेयर्ड दिस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन विद मैम ऑल्सो, प्रज्ञा मैम, तो आपसे शेयर करेंगे, तो उसमें ये स्लाइड जरूर आप प्रिंट करके लगा लीजिए। And you will be very effective communicator if you practice these 3 important elements। The first element is comprehension or clarity। So whenever you are going to communicate, you have a clarity over the subject, and clarity over the subject will come only when you have a very good subject matter knowledge। ठीक है, तो ये तो प्री रिक्विजिट है। यदि आप कम्युनिकेशन की विधा में बोल रहे हैं तो कम्युनिकेशन में आपका स्ट्रेंथ होनी चाहिए। आप जिस भी सब्जेक्ट के बारे में बोलने जा रहे हैं, वट एवर योर सब्जेक्ट इज, यू शुड हैव द सब्जेक्ट मैटर नॉलेज, इन डेप्थ नॉलेज ऑन दैट सब्जेक्ट, देन ओनली यू स्पीक। अदरवाइज क्या होगा, अगर आपका कमांड नहीं है सब्जेक्ट पे और आप पब्लिक प्लेटफॉर्म में बोलने चलेंगे तो क्या होगा बताइए? What will happen if you do not have command over subject matter, but you are speaking in platform? What will happen? Anyone? Yeah. क्या हो? It becomes irrelevant. It becomes Irrelevant. irrelevant। Yes, आप देख ही रहे हैं ना सोशल मीडिया में कितना ट्रोलिंग हो जा रहा है। नॉलेज नहीं है आजकल। आजकल एक ट्रेंड है, आपने नोटिस किया नहीं किया, हम देखते हैं न्यूज में बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज कॉन्स्टिट्यूशनल और ऐसी बातों में बोलते अपना ओपिनियन रखते हैं, क्योंकि दैट इज नॉट देयर फोटे, दैट इज नॉट देयर डोमेन, है ना। फ्रीडम ऑफ स्पीच में बोलने के लिए आ जाएंगे, कौन आएंगे? कोई बॉलीवुड के, और फिर ट्रोल होंगे, फिर ऑडियंस हंसेगी उनपे, क्योंकि उनका वो फोटे है ही नहीं। दे हैव नॉट डन एनी एक्सपर्टीज। वहीं आप देखिए ऑन द अदर हैंड, when Sudhanshu Trivedi ji is speaking, he has a lot of in-depth knowledge of many concepts. Then he's speaking, you can clearly see the difference between a person who is not a learned one but he is speaking, and a person who is learned person and is speaking। वहीं सुब्रमण्यम स्वामी जी को आप सुनिए कॉन्स्टिट्यूशन में बोलते हुए, तो आपको पता चलता है yes he is a trained person, he has read the constitution, he is expert on that domain, right? तो ये आप देखेंगे तो सब्जेक्ट मैटर नॉलेज इज द फर्स्ट प्रीरिक्विजिट ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन। विदाउट दैट यू कैन नॉट अफोर्ड टू कम्युनिकेट। सेकंड कम्स द वैलिडिटी और क्रेडिबिलिटी। आप कितने क्रेडिबल हैं ऑडियंस के लिए, वैलिडिटी कितनी है आपकी। यानी क्रेडिबिलिटी 2 तरीके से बनती है। वन, your past experiences when you are speaking in front of public, time to time you are coming, and first time you have spoken very well, to the point, and you have given a good message, clear message, your message was authentic, तो आपकी क्रेडिबिलिटी बन गई। अगली बार जब चढ़ेंगे लोग कहेंगे अरे वाह ये वही आ गए सर जो बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं और बिल्कुल सही बात करते हैं, इनका सुनते ध्यान से। तो ऑडियंस विल गिव यू स्पेस, ऑडियंस विल गिव यू अटेंशन, है ना। आप टीचर हैं, आप क्लास में गए, पहला क्लास आपने वंडरफुल लिया, बच्चों को कनेक्ट किया, उनके साथ जुड़ गए, तो दूसरी बार आप देखेंगे खिले हुए चेहरे आपको क्लास में दिखेंगे, बच्चे स्माइल करते हुए दिखेंगे, डरे हुए नहीं दिखेंगे, सहमे हुए नहीं दिखेंगे। आप क्लास में जाएंगे तो बच्चे अरे वाह सर आ गए, अब पढ़ाएंगे, अब मजा आएगा, 1 घंटा पढ़ा, अच्छा पढ़ाते हैं, नोट्स भी दे देते हैं, हंसाते भी हैं, पूरा समझा देते हैं, क्रिस्टल क्लियर। ऐसे प्रोफेसर हमारे आपकी हर किसी के जीवन में रहे। इन ग्रेजुएशन स्पेशली, यू रिमेंबर योर ग्रेजुएशन डेज, वी हैव डाइवर्स टाइप ऑफ प्रोफेसर्स हु आर कमिंग इनटू आवर क्लासेस।
आज भी हम उनको याद करते हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते थे, क्लास में माहौल बना देते थे। उसमें अटेंडेंस तो छोड़िए, अटेंडेंस अगर मैंडेटरी ना भी हो तो भी क्लास उनकी खचाखच भरी रहती थी। वैलिडिटी, वैलिडिटी, दैट पर्सन क्रिएट्स वैलिडिटी। योर पास्ट एक्सपीरियंसेस क्रिएट्स वैलिडिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, वैलिडिटी आती है योर कांस्टेंट परफॉर्मेंस से, ठीक है। एंड थर्ड वन इज यूटिलिटी। यूटिलिटी आती है जो आप कंटेंट दे रहे हैं अपने ऑडियंस को, वो कितना उपयोगी है ऑडियंस के लिए। द यूटिलिटी, द डिग्री ऑफ यूटिलिटी इन योर मैसेज, which how your audience derives utility from your message is very important, very very important. For example, if I am going to farmers of Haryana belt who grows rice, and June July is going to come, kharif season, so I should talk about rice because they are rice group. I cannot talk about wheat and other crop. सुन तो लेंगे लेकिन कहेंगे डॉक्टर साहब आपने तो वीट के बारे में बता दिया, आप तो रबी सीजन जब आता तब आप नवंबर दिसंबर में हमें बताते तो हमारे काम के लिए होता। अभी तो आप राइस में बताइए कौन सी वैरायटी आपके आई में आई है, कहां से बीज मिलेगा, कैसे बीज का उपचार करना है, ये बताइए। सो यूटिलिटी, सो व्हाट अ कम्युनिकेटर शुड टेक इन अकाउंट, हु इज माय ऑडियंस, मेरी ऑडियंस कौन है, व्हाट आई एम गोइंग टू स्पीक, मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं अवेयरनेस चाहता हूं, मैं परसुएशन चाहता हूं, मैं समझाना चाहता हूं, मैं अवेयरनेस क्रिएट करना चाहता हूं, तो अपना पर्पस जानना है। So these three things are very important, and if you take care of these three things before going to into class, before going to in a public platform, then आप मल्टीमीडिया का भी अच्छा इस्तेमाल करेंगे और समझ पाएंगे कि मल्टीमीडिया से कैसे सपोर्ट लेना है, राइट। कॉम्प्रिहेंशन, वैलिडिटी एंड यूटिलिटी। सो इन टोटल आप देखें तो कम्युनिकेशन में अगर आप इन टोटल देखें तो इन कम्युनिकेशन व्हेन वी से देयर आर टू इंपॉर्टेंट पार्ट, right? In any presentation there are two important parts with respect to communication. One is verbal communication, what you are saying, that comes with the subject knowledge. मैंने लिखा है, स्लाइड्स आपको मिलेंगी, शेयर कर दी हमने मैम से। सब्जेक्ट नॉलेज, देन लैंग्वेज कमांड, हाउ मच कमांड यू हैव लैंग्वेज। एक और भ्रांति आजकल फैली है जिसको आप बिल्कुल आप सहमत होंगे मेरे से, आप सब लोग लर्नड लोग हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, प्रोफेशनल हैं, लैंग्वेज और नॉलेज को बहुत कोरिलेट करते हैं लोग। फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव अ लाइव एग्जाम्पल टू यू, especially in Delhi. If you have a good command over English, आप इंग्लिश बोल पाते हैं, तो जनरली लोग आपको ज्ञानी समझते हैं, नॉलेजेबल समझते हैं। अगर आप इंग्लिश नहीं बोल पाते, कहीं हिंदी बोलते हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहां लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, तो लोग सोचते हैं इनको नॉलेज नहीं। दिस हैपेंस, आर यू एग्रीइंग विद मी? जनरली पीपल हैव दिस नो, एक थिंकिंग है उनकी। आर यू एग्रीइंग विद मी? Yes, sir. Yes, This sir. happens. This happens many places. If a person is speaking lavish English with lot of jargons, we become quite impressed. यार वाह वाह वाह, क्या इंग्लिश बोल रहे हैं, क्या नॉलेज है। तो जनरली नॉलेज से कोरिलेट करता है। However, it is not a fact, it is myth. Language is a medium to express. Express what? Knowledge. Knowledge is not bounded by language, right? Knowledge is do not, language cannot bound the language. Knowledge. Language is a medium to express. तो हिंदी में अगर कोई व्यक्ति बोलता है, हिंदी में लिखता है, या कोई भी नेटिव लैंग्वेज में लिखता है, तमिल में लिखता है, तमिल में बोलता है, वो ज्ञानी हो सकता है, उसमें क्या बड़ी बात है। चाइना को देखिए, चाइना की तरफ देखिए, ऑल द रिसर्च पेपर दे आर पब्लिशिंग इन चाइनीज ओनली, नॉट इन इंग्लिश, ऑल जर्नल्स आर इन चाइनीज। इजराइल कंट्री की तरफ देखिए, अपने छोटा सा कंट्री, चारों ओर दुश्मनों से घिरा हुआ, एग्रीकल्चर हो, टेक्नोलॉजी कहीं बात हो, पूरा विश्व में विख्यात हो रहा है, अपनी लैंग्वेज, अपनी संस्कृति को लेके बढ़ रहे हैं। सो लैंग्वेज से नॉलेज की जर्नी है, तो लैंग्वेज कमांड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर गोइंग टू एड्रेस फार्मर्स, या आप क्लास लेने जा रहे हैं, तो आप इंग्लिश में आकर क्लास लेना है, तो इंग्लिश में डेवलप करना चाहिए। वी शुड डेवलप अवर लैंग्वेज। लैंग्वेज डेवलप कीजिए। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को 10 या 12 भाषाओं का ज्ञान था, उसमें वो लिख सकते थे, बोल सकते थे। इट मीन्स ह्यूमन कैन लर्न, लैंग्वेज इज अ साइन एंड सिंबल्स, so you can learn it. So language command, the language in which you are going to talk with your audience, you should have a good command over that language. So subject matter is important, very important, is the base of all communication. Then language command, then comes the tone and pitch. Tone pitch से क्या समझते हैं, कोई बताएंगे? Tone and pitch in communication, have you heard these terms, tone and pitch? Anyone, if you have heard any example you want to relate? Yeah, yes please. Using voice when slow down. Using voice when? Voice modulation, sir. Yes, Whenever you yes. want to tell something important, we need to press Yes, it. yes, very good. Exact answer sir has given. When you have to pick your voice up, when you have to go down. And there are many examples. जैसे मैंने अभी स्वामी विवेकानंद जी का ही आपको एग्जाम्पल दिए,
उन्होंने जब वहां भाषण दिया, वो तो किसी और ने रिकॉर्ड किया है, उनके बिहाफ में उस समय ऑडियो रिकॉर्डिंग्स नहीं हुआ करती थी, उनका ओरिजिनल वॉइस रिकॉर्ड हुआ था, पर वो जो उस समय की डिस्क होती थी वो खराब हो गया, तो वो रिकॉर्ड में नहीं है। लेकिन उसको लोगों ने बताया है अपने एक्सपीरियंस से, जो वहां के लोग थे उन्होंने लिखा है किस तरह से बोले स्वामी विवेकानंद। द वे ही स्पोक, sisters and brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the cordial welcome which you have given us effective way में। तो एक एक जो शब्द होता है ना, द एवरी वर्ड हैज lot of energy. So it depends on the speaker how you are putting each and every word and how you are hammering those words so that it creates a whole aura. You all might have watched कौन बनेगा करोड़पति of अमिताभ बच्चन जी. At the end अमिताभ बच्चन जी जनरली अपने फादर हरिवंश राय बच्चन की कविताएं बहुत बोलते हैं, and the wonderful way he narrates his कविता है ना, लहरों के डर से माझी नौका पार नहीं होती और जो कोशिश करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती। एक एक शब्द को, every word he will put emphasis, emotion, है ना, where to go up, where to go down। उनकी मूवीज देखिए अमिताभ बच्चन की, कितने बढ़िया डायलॉग डिलीवरी, एंग्री यंग मैन बन गए, है ना। तो टोन एंड पिच, when to go up, when to go down, you should have a knowledge, है ना। it creates magic। वही मैसेज आपको मैं बताऊं, if the same message I will give to a person who will just read it out, it will not create an impact। if the same paragraph is given to a good communicator, he will make impact and audience will clap। एक दे पंच देने की बात होती है ना। मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन आर दोस टोन पिच को आप कैसे मॉड्यूल कर रहे हो, एकदम हाई जा रहे हैं, बहुत ज्यादा हाई भी नहीं जाना, इट डिपेंड्स ऑन द ओकेजन। इफ इट्स अ डिबेट अगर हो रही है तो आपको थोड़ा रहना है, जोश में रहना है, एंगर भी दिखाना है, अपना तर्क को साबित करना है। इफ इट्स अ डिक्लेमेशन यानी भाषण है, तो भाषण में आपको पॉजिटिव भी बोलना है, टॉपिक में नेगेटिव भी बोलना है, तो एक लय पे चलना है ना। काव्य पाठ है तो उसका एक अलग तरीका है, ग्रुप डिस्कशंस है, साइंटिफिक प्लेटफॉर्म में सेमिनार्स हैं, वहां पेपर प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, वहां थोड़ा कविताएं के माध्यम से बोलेंगे, वहां तो एक साइंटिफिक, right? So it depends, so communication, verbal communication changes as your communication changes, right? And then emotions, always you have to connect with your audience। and second comes non-verbal communication, and you will be surprised to see 40 to 45% of total communication comes from verbal communication and 55 to 60% comes from non-verbal communication। can you give me an example of a personality who have not used any verbal communication, with only using non-verbal communication he has communicated many things? Any personality? Mr. Bean. Yes, very good, Mr. Bean। any other example? Mr. Bean, sir. yes, Mr. Bean तो वहां के हो गए हॉलीवुड के। इंडिया से कोई एग्जांपल दीजिए, या वहीं से एक और एक। ब्रह्मानंदम। हाँ, और बताइए। ब्रह्मानंदम, मिस्टर तेलुगु बीन एक्टर तो सर, ब्रह्मानंदम। या वेरी गुड, ब्रह्मानंदम। एंड मिस्टर बीन नाउडेज, अर्ली टाइम पे चार्ली चैपलिन थे। चार्ली चैपलिन वाज द पर्सन हु स्टार्टेड एक्चुअली कॉमेडी विद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, है ना। तो यू कैन सी हिज मूवीज विदाउट अटरिंग अ सिंगल वर्ड, द वे ही क्रिएट मैजिक इन स्क्रीन, एवरीबॉडी यूज डाई ऑफ लाफिंग, हंस हंस के लोटपोट हो जाते थे। so body movement, gestures, postures, eye contact, dressing sense, that creates 55 to 60% of the aura, and the rest 40 to 45% of verbal communication, right? overall impact। so this is a clip, मैं अभी लास्ट में दिखाएंगे आपको। these are all our clips which I have shared for you, लास्ट में, क्लास के लास्ट में दिखाएंगे, because we have just less time। yes, this is very important। now, having a background of this type of communication, so you understand communication, you understand effective communication, how to give your lectures effectively। now you understood comprehension, validity, and utility, these three important parts should be there in your communication। so now how you should use multimedia so that your communication becomes effective, ठीक। the first rule which I already told is know your audience। ऑडियंस को पहचानना बहुत जरूरी है। मल्टीमीडिया आप 10 तरह का यूज कर लीजिए, अनटिल अनलेस यू हैव नॉट अंडरस्टूड योर ऑडियंस, ये तो बैकफायर होगा, बिल्कुल नहीं समझेंगे। लोग कहेंगे बोला बहुत अच्छा था डॉक्टर साहब, लेकिन समझ कुछ नहीं आया। सो इट्स देयर इज नो यूज ऑफ दैट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। वी आर नॉट देयर टू इंप्रेस, वी आर देयर टू एक्सप्रेस, ठीक है। तो नो योर ऑडियंस, सो यू हैव टू नो, इफ आई एम गोइंग टू टेक अ क्लास ऑफ 12th क्लास स्टूडेंट, BSc agriculture, MSc agriculture, PhD in agriculture, if I am going to deliver a seminar in a scientist platform where eminent scientists are there, if I am going to talk people not of my native country but abroad, having a different culture background, different type of language, so what my audience wants will change my communication strategy। so educational background, beliefs, language, norms, customs are very important to know। second point which you should keep in your mind before using multimedia, it should be specific, focused,
and positive in approach. Your purpose should be specific. For example, if you are there to make people aware, so you can use different type of channels in communication. You can use radio, you can use newspaper, you can use television. If you are there to persuade, so you have to communicate in group discussions only. छोटे छोटे ग्रुप में डिस्कशन करना पड़ेगा, परसुएशन कराना है, क्योंकि अपनी बात मनवानी है दूसरे से, तो उसके पास जाना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, राइट? सो स्पेसिफिक, फोकस्ड, पॉजिटिव इन अप्रोच, नो योर पर्पस. ठीक है, ये भी मैं आपको बाद में करवाऊंगा, राइट? ये आपको मैंने कुछ बताना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए. So now coming to multimedia, having this background of communication, designing your presentation. How you design your presentation. Nowadays, PowerPoint presentation, video-based modules are becoming very powerful tool of expression. Everywhere, जहां भी आप सेमिनार में जाइए या क्लास में जाइए, स्मार्ट क्लासरूम बन गए हैं, PowerPoint है. अब क्या होगा, उसका उपयोग भी हो सकता है, उसका दुरुपयोग भी हो सकता है. Now you can harness multimedia if you know the tactics behind it, how to use it. And you can also create a disaster for your class or for your audience if you do not know how to handle multimedia, right? You have to design your presentation in a way. The first thing is you have to collect data. मैं आजकल देखता हूँ nowadays many people making PowerPoint, इंटरनेट पे ढूंढ लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं. That is one point, but data from original sources should be there, right? In research areas, Krishi course, all the theses are in soft copy there. You can refer to those theses. Sodh Ganga and Google Scholar, these are big medium to search any research paper nowadays. And if your university has assigned taken license or approvals from different journals, so you can archive those, like Science Direct is there, right? So one thing which you should keep in point is whatever data you are quoting, first you have to take reviews from the original sources, not from Google links. You have to take data from original sources. Second, it's PowerPoint presentation, not power paragraph presentation. This is the key word. अगर आपने आज के लेक्चर से इतना भी पॉइंट लेके आप चले गए, तो मैं समझूंगा कि सार्थक हुआ आज का लेक्चर. It's PowerPoint. It's का नाम ही PowerPoint presentation है. But nowadays, you will agree with me. I am going in many scientific deliberations, in many programs. People had made it power paragraph. पूरा कॉपी पेस्ट करके क्लटर कर देते हैं पूरा प्रेजेंटेशन को. और सबसे मजे की बात है, पढ़ते चले जाते हैं. वहां से स्टार्ट करेंगे, दिस इज माय फर्स्ट स्लाइड, पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट करने वाला भी दूसरा होगा, कोई वहां बैठा हुआ बेचारा, वो भी बोर हो जाता है. फिर ऑडियंस भी बोर हो जाती है, फिर हॉल में कोई बैठता ही नहीं है, सब लोग शॉपिंग करने चले जाते हैं. सो इट हैपेंस when you make your PowerPoint paragraph presentation into power paragraph, right? So it's always points should be there. तो अब मैंने आपके लिए ना बहुत कुछ useful tricks through research paper and many good articles, फॉरेन ऑथर्स के आर्टिकल से मैंने कुछ कुछ कलेक्ट किया. अगर आपका पेन कॉपी है तो जरूर लिखिए, और अगली बार जब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाए तो ऐसे बना के देखिएगा. सो यू विल कम टू नो योर प्रेजेंटेशन विल बिकम मोर इफेक्टिव, राइट? फर्स्ट थिंग इज मेक गुड यूज ऑफ लेआउट्स. नाउ व्हाट इज लेआउट्स इन प्रेजेंटेशन? देयर आर मेनी लेआउट्स. इट कम्स विद योर इनबिल्ट विंडो प्रोग्राम ऑल्सो, यू कैन इंस्टॉल इट ऑल्सो. बहुत ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा कलरफुल यूज नहीं, सिंपल बनाएंगे. और लेआउट्स में क्या है, नाउ one thing which is coming up, all the PowerPoints are being made into landscape mode. Earlier पहले हम portrait mode में बनाते थे, जैसा मैंने बनाया है, पर landscape में बनाएंगे तो पूरा स्क्रीन में फैल जाता है, and you are getting a good space also. So layout you can select according to your choice, portrait, landscape, and many layouts are coming, many designs are there. So always connect, always select those type of layouts where fonts comes ahead and attractive, and layouts can play the secondary role. Second thing is say no to sentences. Don't make full sentences. I am seeing nowadays many people are using multimedia, this PowerPoint, in a way that they will write the full stanza and saying 1900 opined that this the extension and communication is a science derived from these areas. So sing आ गया, keywords लिखिए, and you are there to explain these points, right? पूरा paragraph लिखने की जरूरत नहीं. For this, there is a rule in PowerPoint presentation which we call as 6x6 rule. Follow the 6x6 rule. यानी maximum of 6 bullets per slide and maximum of 6 words per point. आप समझिए इस बात को? 6 बुलेट होने चाहिए, मैक्सिमम एक स्लाइड में 6 बुलेट आ सकते हैं आपके, और हर एक जो बुलेट लाइन आएगी उसमें 6 वर्ड्स होने चाहिए. इसका मतलब PowerPoint presentation is there to give you a hint,
पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इसलिए है हमारे साथ, हम जो बताना चाहते हैं कि हमें पूरा याद ना रखना पड़े, देखें, पॉइंट क्यू लें और फिर एक्सप्लेन करें, देखें, पॉइंट लें, क्यू लें, एक्सप्लेन करें, इसके लिए। तो 6x6 रूल आपको समझ आया, 6 बुलेट पर स्लाइड एंड मैक्सिमम ऑफ 6 वर्ड पर पॉइंट। इसका मतलब आप देखिए कितना कम लिखना चाहिए हमें पावर पॉइंट। यहाँ पर 3 पॉइंट है, यहां तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, यहां तक आपको समझ आ रही है बात, यूजफुल लग रही है पॉइंट्स, आप प्लीज पूछिए। If you have any questions till now, you can please feel free to ask. If you have any confusion, if you want to add something, you can always add. Yes, you are getting the points ना? आप लोगों को समझ में आ रहा है बात? यूजफुल लग रहा है? Yes, sir. Can we submit a document in PowerPoint slide? Yes, sir. Okay. Can you communicate, ma'am? Document? No, I mean document means suppose 10, 15 lines in one document, in one slide, and making the presentation complete. हाँ, वो भी कर सकते हैं। Instead of in Bullet points. write up, हाँ. instead of submitting write up, Yes. we are using PowerPoint. Just to हाँ. focus area will increase, so that memory will be enhanced. Yes, yes. Why not? You can do it. Things. You can always customize it. These are general rules which generally we should follow. But you can always customize. मैंने भी तो ये देखे, मेरे पावर पॉइंट देख रहे होंगे पूरे, मैंने खुद बनाए, मेरा कलर चॉइस है, ये मेरा स्टाइल है, ये बेके का। आप देखेंगे हर किसी का अपना एक पर्सनल टेस्ट होता है इन सब चीजों को लेके, कलर्स को लेके, चॉइसेस को लेके। So it depends on you also. You can always customize. But the point here is the slide should not look very cluttered. ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं देखता हूँ बहुत सारे, आप भी देखते होंगे सेमिनार्स में जाकर ना, जैसे स्टूडेंट हमारे रिसर्च सेमिनार दिखाते हैं, whenever we take ORW seminars और thesis सेमिनार होता है, तो बच्चा पहला स्लाइड दिखाता है, पूरा भर देता है इंट्रोडक्शन, और फिर पढ़ता जाता है, this is market change, value change, are the demerits, processing rate of India इतना, according to this, वो पूरा ऐसा हो जाता है। तो it becomes, then the communicator becomes a reader. When communicator becomes a reader, तो बोरिंग हो जाएगा, बिल्कुल आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता। कम्युनिकेटर शुड बी कम्युनिकेटर, और उसको केवल क्यों लेना है प्रेजेंटेशन से। सो मेक गुड यूज ऑफ लेआउट। 1, say no to sentences, big sentences, have bullet points, 6 bullet points per slide and a maximum of 6 words per point। ये एक इन्होंने दिशा दी है, जरूरी नहीं कि आप 100% इसको फॉलो करें, लेकिन एक दिशा दी। यूज सिंपल कलर्स। या यस सर, प्लीज पार्डन प्लीज सर। पिक्चर्स, यस, अभी मैंने लिखा है। yes, why not always, there are always, you should add pictures। अभी मैंने लिखा है, पिक्चर्स के बारे में मैं बताऊंगा आपको। यूज सिंपल कलर्स। सिंपल कलर्स मींस द कलर कोड। आप कभी कभी देखे, मैं अभी एक हाल ही के सेमिनार में अटेंड कर रहा था, उनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, बोलने का तरीका बहुत अच्छा था, बट द कलर्स दैट पर्सन हैज यूज्ड वर वेरी कॉन्ट्रास्ट। जैसे ब्लू रंग का उन्होंने बैकग्राउंड रखा और ब्लैक रंग से हेडिंग डाली, तो ब्लू कलर का बैकग्राउंड है और ब्लैक कलर से हेडिंग है, तो हम लोगों को ऐसे देखना पड़ा था क्या लिखा है इन्होंने, दिख ही नहीं रहा। बिकॉज कलर व्हील, अगर आपको याद हो, प्राइमरी कलर व्हील हम एक्सटेंशन में पढ़ाते थे, एक्सटेंशन के कोर्स में प्राइमरी कलर व्हील आता है ना, प्राइमरी कलर्स, सेकेंडरी कलर्स, एंड विच कलर्स कैन गो विद विच कलर, दैट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। लाइक मैंने अभी प्राइमरी कलर्स का एक रूल से बनाया है डिजाइन, तो मरून कलर, येलो कलर, व्हाइट कलर विल कम इन फ्रंट, है ना, ग्रीन कलर, सो येलो कलर, व्हाइट कलर विल कम इन फ्रंट। सो यूज अ डार्क बेस और देन लाइट फॉन्ट, और यूज अ लाइट फॉन्ट और डार्क फॉन्ट, है ना। तो ऐसा कॉम्बिनेशन बनाइए कि दूर से भी दिखे, दिखना चाहिए, अच्छे से दिखना चाहिए, राइट। देन यूज फॉन्ट लार्जर देन 30 पॉइंट। 30 पॉइंट से ज्यादा का स्लाइड आपका होना चाहिए, 60 और 70 पीपल आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, ये रूल है, ये मतलब एक दिशा बनाया गया है। अगर आपके पास 50 to 60% का ग्रुप है, यू आर प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ देम, or even if you are going to present a paper presentation in a seminar where audience is sitting in auditorium, you will be presenting, so you should use a font larger than 30 point, so then only it will be visible। कभी कभी आप देखते हैं फॉन्ट इतना छोटा हो जाता है कि वो जो पढ़ रहे होते हैं उनको भी ऐसे ऐसे जाना पड़ता है वहां इंडिकेटर लेके। सो 30 पॉइंट मैंने देखे कितने बड़े बड़े फॉन्ट रखे हैं, सो दैट इजीली आपको दिख रहे हैं। देन कुछ डेफिनेशन हमको ऐड करनी हो, जैसे किसी साइंटिस्ट की डेफिनेशन है, तो वो तो हमको पूरी लिखनी पड़ेगी ना, तो फिर उसको 6x6 में कैसे कर सकते हैं? Yes, when there are always exceptions. I am talking about those things. The major part should come in bullets. Definition, you can write it down, and the best way to write definition is, suppose I am quoting a definition, suppose extension definition by J.P. Liggins, है ना,
जेपी लीगन्स का डेफिनेशन लिख रहे हैं हम, जेपी लीगन्स हमने लिखा, ईयर लिखा ब्रैकेट में। अब जरूरी नहीं कि मैं पूरा लिखूं, एक्सटेंशन एजुकेशन इज अ एजुकेशनल प्रोसेस डिफाइंड एंड हैविंग अ साइंस डिराइव्ड फ्रॉम सोशियोलॉजी। मैं क्या करूंगा, डेफिनेशन के कीवर्ड्स लिख दूंगा। The best way to write definition is you should write the keywords of definition. For example, communication की definition मैंने दिखाई, the keywords is when two or more people, comma, common understanding, express ideas. बस these three words comma में मैं लिख दूंगा। And the whole definition I as a communicator will synthesize. मैं वहां पर सबके सामने खड़ा हूं, तो अदरवाइज मेरा वजूद क्या है वहां पर खड़े होने का? नहीं। अगर मैं वहां पर खड़ा हूं और मेरा वो विषय है, मेरा सब्जेक्ट मैटर है, तो मुझे केवल कीवर्ड्स वहां पर रखने हैं। तो कीवर्ड्स मैंने देखे और मुझे अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए जो धीरे धीरे डेवलप होती है कि मैं उसको डेफिनेशन बना लूं। और अगर आप डेफिनेशन छोटी है तो रख सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो ऑलवेज इट्स बेटर टू कीप द कीवर्ड्स। कीवर्ड्स रख लीजिए, फ्रेम सबके सामने अपना कीजिए इफेक्टिव वे में, है ना? ऐसे इफेक्टिव लगेगा, लोग समझ कीवर्ड्स को दे कैन टेक होम, कीवर्ड्स उनको याद भी रहेंगे, पूरा डेफिनेशन कभी याद नहीं रहेगा। So use font larger than 30 point. Font size should be at least 30 point. Choose the right images. Now, just for sake of putting images, we should not put images. जैसे भी सर ने पूछा कि इमेज लगा सकते हैं, बिल्कुल लगाने चाहिए, अट्रैक्टिव बनाने चाहिए, but the image should be supportive, not destructive. It should be inspiring and engaging. Suppose you are talking about a certain disease and pest, आप बात कर रहे हैं, तो उस डिजीज का सिम्टम्स अगर लगा देंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। यहां आप लिख रहे हैं कि ऐसा पेस्ट ऐसे डैमेज करता है, ये केमिकल डालना है, ऐसा करता है, उसका एक पेस्ट का बढ़िया रेजोल्यूशन पे एचडी में फोटोग्राफ लगाओ, तो फार्मर्स ऑडियंस कैन अंडरस्टैंड, अच्छा हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये ऐसे डिजीज करता है, ऐसे 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 नुकसान करता है, अच्छा इसको केमिकल का नाम ये है, ये अट्रैक्टिव बनती है। सो इट शुड बी सपोर्टिव, द कॉन्टेक्स्ट वही होना चाहिए, जिस बारे में बताएं उस पर भी लगाए इमेज लगाइए, नहीं फ्लो डायग्राम्स लगाइए, एरो डायग्राम। ये तो हम हमेशा रिटर्न पार्ट में भी बताते हैं बच्चों को, जब एआरएस मेंस यूपीएससी मेंस लिखते हैं, हम बताते हैं कि फ्लो डायग्राम बनाइए, फ्लो है। जैसे फॉर एग्जांपल क्लासिकल एग्जांपल में देता हूं आपको चार्ट्स का, सैंपलिंग प्लान। मेनी टाइम्स यू विल प्रेजेंट दिस इज माय सैंपलिंग प्लान, और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि दे राइट पैराग्राफ इन सैंपलिंग प्लान दैट responded has been selected from 2 districts which has been selected from purposive sampling and overall 60 farmers from per district collected, ऐसे पूरा लिख देंगे। instead of writing it, let's make a map, let's make a flow diagram जिसमें सैम्पलिंग हो, पर्पसिव सैम्पलिंग, देन रैंडम सैम्पलिंग, उसमें तीर लगे हो, पूरा बढ़िया सा डायग्राम बना हो, so that you can explain and audience can easily understand what type of sampling you have done, right? So your images, your graphics should be supportive, not destructive, inspiring and engaging. Then use a uniform themes. A uniform themes pulls together the variety in your images and the message. ठीक है? यूनिफॉर्म थीम होनी चाहिए। आप देखेंगे कोई स्लाइड नीले कलर की आ रही है, फिर पीले कलर की आ रही है, फिर डार्क कलर की आ रही है, बहुत डिस्ट्रक्शन होता है। एक कलर कोड में चलना चाहिए, एक तरीके का स्टाइल होना चाहिए, सो दैट इट कैन बिल्ड अ स्टोरी। देयर शुड बी अ थीम, अ स्टोरी इज गोइंग टू बी बिल्ड, right? So use a uniform theme is always recommended. One story per slide, one story per slide. For a 60-minute speech, you can have 30 to 35 slides. This is ideal, and this is very customized. If your speaking speed is more and you are able to manage many things together, so you can use many things, है ना? तेजी से बोलते हैं, जल्दी बोलते हैं, जैसे मेरा हैबिट है, मैं थोड़ा तेज निकलता हूँ, और इसलिए मैं 30-40 स्लाइड्स भी 60 मिनट्स में कर लेते हैं, है ना? इट डिपेंड्स ऑन यू, योर वोकैबुलरी, योर डिलीवरी स्टाइल, बट वन स्लाइड शुड प्रेजेंट वन आइडिया। ऐसा नहीं कि एक ही स्लाइड में बहुत सारी चीजें गजबज दिखा दें, बिल्कुल क्लटर कर दें, ऐसा नहीं। वन स्लाइड शुड गिव वन आइडिया, अनदर स्लाइड शुड गिव अनदर आइडिया, सो इट विल मेक यू क्लियर। Then there is another rule, 2-4-6 rule कहते हैं, 2/4/6 rule कहते हैं, have a new slide every 2 minutes when you are speaking ना, at least हम तो ये रिकमेंड करते हैं कि at least 15-20-30 सेकंड में एक स्लाइड बदल जाना चाहिए, but still if you are engaging more, if your subject is demands that one you have to focus on a particular slide more, so have a new slide every 2 minutes, not more than 4 bullets per slides, or 4 to 6 you can vary it, and not more than 6 words per bullet। ठीक है? 2/4/6 का भी रूल हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हम यूज करते हैं मल्टीमीडिया, है ना? देन पीपीटी शुड नॉट रिप्लेस यू, दिस इज अल्टीमेट। ये तो जितना मैंने पॉइंट बताया वो तो आप सब डिजाइन करते हैं, पावर पॉइंट्स इफेक्टिव वे में डिजाइन करते हैं, लेकिन इट शुड नॉट रिप्लेस यू। पावर पॉइंट इज अ सपोर्टिव एलिमेंट विद कम्युनिकेटर। मैं आई हैव सीन यू विल आल्सो कनेक्ट विद मी, कभी कभी तो हमने ऐसे देख लिया, मैंने ऐसा देखा कि कम्युनिकेटर आ गया, एक्सपर्ट आ गया, लाइट चली गई, और लाइट चलेगी तो लेक्चर ही कैंसिल करना पड़ रहा है आजकल। मतलब कि एक्सपर्ट्स में आजकल इतना भी वो नहीं रह गया कि लाइट जाके पे क्या आप 1 घंटा संभाल नहीं सकते क्लास को?
इतना डिपेंडेंसी हो गई है, पावर पॉइंट रहता है, पेन ड्राइव रीड नहीं कर रही, अरे पेन ड्राइव रीड ही नहीं कर रही, चलो बच्चों आज की क्लास हम कैंसिल करते हैं, कोई बात नहीं कल करेंगे, पावर पॉइंट भूल गए, लाइट चले गई तो क्लास ही कैंसिल हो जा रही, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड हैव अ कैपेसिटी, व्हेन नीड कम्स यू शुड रिप्लेस दिस पावर पॉइंट विद चॉक एंड बोर्ड। इतना दम तो कम्युनिकेटर और सब्जेक्ट के अंदर होना ही चाहिए, राइट? सो पावर पॉइंट शुड नॉट रिप्लेस यू। People want to listen to you, your thoughts, your insight, your interpretation. PowerPoint is there to support you as a system. It should not replace you. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड प्रॉपर मिक्स ऑफ मीडिया होना चाहिए, जिसमें मैंने आपको बताया नो योर ऑडियंस, अपनी ऑडियंस को जानना चाहिए, अपने मैसेज को ट्रीट कीजिए, ट्रीट योर मैसेज। जैसे मैंने पूरा ये देखिए लेक्चर 1 घंटे में बैठाने के लिए इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन का पार्ट, देन पावर पॉइंट का पार्ट मैंने ट्रीट किया इसको, कैसे मुझे बोलना है। यही लेक्चर अगर मैं स्कूल में करता तो आई विल ट्रीट इट इन अ डिफरेंट वे। यही लेक्चर मैं कहीं और करूं जहां ऑलरेडी कम्युनिकेशन के विद्वान लोग हैं, जिनको सब कुछ पता है, एक्सपर्ट है, तो फिर मैं थोड़ा और एडवांस पे जाऊंगा, खुद सीखूंगा, रिसर्च करूंगा। ठीक है, सेलेक्ट सुटेबल चैनल्स, यूज वीडियो, ऑडियो, ग्राफिक्स टू मेक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। हमारा आप जानते हैं ये एक इनिशिएटिव है पूसा समाचार, हम उसे लीड कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम है। तो उसमें हमने देखा मल्टीमीडिया का यूज किया, वी हैव हार्नेस सोशल मीडिया, वी आर यूजिंग वीडियो बेस्ड एक्सटेंशन मॉडल, वीडियो बना रहे हैं, वीडियो में ग्राफिक्स दे रहे हैं, इमेजेस, यानी वी आर यूजिंग जेपीजीज, वी आर यूजिंग MP4 वीडियो, एंड वी आर यूजिंग अ सॉफ्टवेयर नोन एज Adobe Premium Pro CC। So we are editing it, हमारी टीम है, लैब है, वहां रिकॉर्ड करते हैं, एक्सपर्ट्स की बाइट फील्ड में लेते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, ग्राफिक्स लेते हैं, और पूरा हर हफ्ते किसानों को उसका समसामयिक कंटेंट देते हैं। यू कैन फॉलो अवर यूट्यूब चैनल, IRA का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, तो पूरा समाचार एवरी सैटरडे इट कम्स, राइट? सो दिस इज द वे टू कनेक्ट योर ऑडियंस। ठीक है, तो जो चीज मैंने छोड़ दी थी, एक मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट? एक छोटा सा वीडियो, वी हैव 3 or 4 minutes, एक इंपॉर्टेंट वीडियो देखिए। ठीक है, आई होप वॉइस विल कम, जस्ट वी विल चेक इट, हाउ वंडरफुली यू कैन एक्सप्रेस योर आइडियाज। वॉइस इज कमिंग ना? It's not audible, sir. अच्छा, वॉइस इज नॉट कमिंग? It's not The audible voice is video. not No, coming. sir. Not नहीं coming. आ रहा है It's not coming. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो ये वीडियोस मैं आपको लिंक दे दूंगा। आई विल शेयर दिस ऑल वीडियोस आई हैव टेकन फ्रॉम यूट्यूब, नो वरी। सो आई विल शेयर दिस लिंक्स विद मैम, and ma'am will give these links so you can see how effective one person can be while communicating। ठीक है, so there are many barriers of communication, ये भी किस दिन चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी चीजें हमें रोक लेती हैं कम्युनिकेशन करते वक्त, क्या क्या चैलेंज, कभी कोई वर्कशॉप में जोड़ेंगे आपके साथ तो उसमें डिटेल में करेंगे। आज हमने पावर पॉइंट पे जोर दिया, सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इसको कहीं गागर में सागर समाना, अगर एक बात कहें कि आपने ये जिस दिन महसूस कर लिया है कि पावर पॉइंट हमारे सपोर्ट के लिए है, तो आप बहुत अच्छी पावर पॉइंट बनाएंगे, क्लियर पावर पॉइंट बनाएंगे, उस पर डिपेंडेंट नहीं, उसको एज अ टूल यूज करेंगे। वीडियो हमारे सपोर्ट के लिए है तो उसको तरह यूज करेंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, सो वी आर स्टिल लेफ्ट विद 5 minutes। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑफ स्मॉल डिस्कशन व्हाट वी हैव टॉक्ड टिल नाउ। कोई भी डिस्कशन बताइए। तो ब्रीफली मैंने आपको बताया कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आपको सब कुछ नहीं भी याद रहे, एक स्लाइड मैंने बहुत एम्फेसिस दिया, कॉम्प्रिहेंशन, वैलिडिटी एंड यूटिलिटी। These 3 things you should take care, and you will be very impressive teacher, you will be very good orator, communicator, कहीं भी जाएंगे तो रहे। एक कोई चैट में आ रहा है, किसके सवाल में देखता हूँ। Nice presentation, thank you, not audible, not audible। Then sir, how to present table? Yes, table should be presented, table को आप present कीजिए जैसे रिसर्च में है, पर ध्यान रखिए कि टेबल का फॉन्ट इतना छोटा ना हो जाए, रीडेबल का प्रेजेंट करने का तरीका इस तरह से है, अब कभी डिटेल में बताएंगे कि प्रेजेंट कर लिया आपने टेबल, तो जिस पार्ट को आप हाईलाइट करना चाहते हैं उसमें आप अपना एक एनिमेशन दीजिए, लाइन कर दीजिए, या कलर उसका चेंज कीजिए जिसको आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं, जहां फोकस करना चाहते हैं। ठीक है, और फॉन्ट उसका भी बड़ा रखिए। एवरी टेबल यू शुड नॉट गिव, दैट्स व्हाई मेकिंग अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो एन आर्ट, है ना? So how to और play YouTube videos directly on the PPT, sir? ये तो YouTube, अब हम तो ऐसा करते हैं, जैसा भी तो ऑनलाइन है, अगर फिजिकल मेरा एक क्लास होता है, मैं ऐसा करता हूँ, एक फोल्डर रखिए, केवल एक फोल्डर बना लीजिए जिस टॉपिक के नाम से, इन दैट फोल्डर यू डाउनलोड द वीडियो, यू पुट द वीडियो, एंड देन यू इंसर्ट दैट वीडियो फ्रॉम द इंसर्ट वीडियो कॉलम ऑफ योर पावर पॉइंट। इन अपसाइड देयर इज वन ऑप्शन, इंसर्ट वीडियो,
You click on it, you click on that video will be inserted in PowerPoint, you stretch it and complete कर लीजिए स्क्रीन पे, एंड देन आप प्ले करेंगे तो वो चल पड़ेगा, बशर्ते एक ही चीज है कि you have to keep that video in the folder, and when you are copying in the system, that whole folder you have to copy, because that folder, that PowerPoint will take video from there in your folder. So keep all the videos in the folder as MP4. In PowerPoint you link it, then you will able to play in the one click. Thank you, sir. और पूछे, any questions you want to ask? Any questions? आप लोगों के फेवरेट कम्युनिकेटर, मैंने आज बहुत सारी पर्सनालिटीज आपको दिखाई, कोई बताएंगे और कौन से? जैसे मैंने सदगुरु दिखाए आपको, शिव खेड़ा दिखाया, संदीप महेश्वरी, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अच्छा बोलते हैं, और बहुत सारे लीडर्स के मैंने चित्र दिखाए आपको। तो उसके अलावा भी अगर आपके कोई हैं चहेते जिनको आप फॉलो करते हो? Khan sir. Khan sir, yes, he's a very young person and he is teaching millions of people, billions of people को पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे से हर टॉपिक पे बोलते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सर। और बताइए, और किसको फॉलो करते हैं? डॉक्टर विकास, यस यस, आईएएस एकेडमी के, हाँ बिल्कुल। मैं भी उनके वीडियोस देखता हूँ, बहुत अच्छे से समझाते हैं कि चीज को कितने सुंदरता से उसके अंदर के कॉन्सेप्ट बताते हैं, बहुत बढ़िया। तो इस तरह के चैनल्स अगर आप फॉलो करते हैं, सो मेरा भी एक चैनल है, इफ यू वांट टू फॉलो विद माय नेम ओनली, आई विल पुट दैट लिंक इन माय चैनल, है ना, जस्ट आप भी देखिए, मैं भी एकेडमिक कंटेंट बनाता रहता हूँ उसमें, यस कहीं सर, अच्छी जगह गए, हाँ उस एक्सटेंशन के स्टूडेंट्स के लिए, जेआरएफ के लिए, सोशल साइंस के लिए, ये मैंने लिंक दिया है, मेरे ही नाम से, डॉक्टर गिरजेश मेहरा, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट, स्वामी विवेकानंद जी का चित्र लगा है। सो मोटिवेटिंग कंटेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स का मैंने एक वीडियो बनाकर डाला, वो बहुत पसंद आया लोगों को, उसका सेकंड पार्ट, और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्किल्स के लिए बहुत लोगों का डिमांड है कि सर उस पर एक वीडियो बनाइए, तो मैं जल्दी बनाऊंगा। सो यू बी इन टच विद माय चैनल, यू विल फाइंड, एंड यू कैन आल्सो डिमांड, यू कैन कमेंट कि सर वी वांट अ वीडियो ऑन दिस, तो हम दो तीन लोग हैं मिलके करते हैं, तो एक अच्छा वीडियो बना के आपके उसके लिए बनाएंगे। बाकी तो आप सब लोग लर्नेड लोग हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, आप सबको पता है कैसे करना है। तो इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस, so now it's third. So two questions are in the chat box. First is it's good question that reference, how to present references in the slide, and second one is the font size of heading, subheading, and Yes. subject. Yes, references, yes, you can put, there are two. Is there any particular ratio for that? हाँ सर, क्या बोला आपने? Is there any particular ratio? Is there is any particular? सर जो सब हेडिंग का रेशियो होता है क्या? नहीं, ऐसे नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, पहले रेफरेंसेस ले लेते हैं मैम। रेफरेंसेस को दो तरीके से दिया जाता है पावर पॉइंट में। वन वे इज व्हेन यू आर कोटिंग योर रिसर्च, सपोज यू आर मेकिंग अ बॉक्स और रेफरेंसेस, इन बिटवीन, इन लास्ट एंड ऑफ द स्लाइड यू मेक अ बॉक्स एंड यू हैव गिवन अ रेफरेंस इन एपीए स्टाइल, वहीं पर दे दीजिए। कभी कभी क्या होता है, वहां पर नहीं देते, एट द एंड यू पुट 2 or 3 स्लाइड्स जहां पर रेफरेंसेस देते हैं आप एपीए स्टाइल। So it depends. So generally in seminars, when you are in scientific platforms, रेफरेंसेस तो कोई देखता नहीं, क्योंकि लास्ट में जब थैंक यू कहते हैं तो उसके बाद दीजिए हमें रेफरेंसेस कहते हैं, तो देख तो सकते नहीं। बेस्ट वे जो मैं प्रैक्टिस करता हूं, इफ आई एम गिविंग सपोज सिंग 1980, आई हैव गिवन अ रेफरेंस, तो उसी स्लाइड के नीचे एक छोटे फॉन्ट में, बोल्ड में, वहीं पर रेफरेंस एक बॉक्स के अंदर दे देता हूं, so that when I was explaining that slide, so people want to know more about that, they can note down from which this paper I have taken it, right? This is the good way of making scientific presentation. You should give references in that slide, in the bottom line, in the bottom line. And your second question is heading, yes, font size should be more, 30 जो पॉइंट मैंने बोला कि अगर आप 30 बड़े ऑडियंस के लिए जा रहे हैं, बड़े हॉल पे देना है, तो 30, 25, 26 आप फॉन्ट साइज रखिए, एंड 30 आप हेडिंग का साइज रखिए। सब हेडिंग्स यू कैन वेरी इट, इट्स डिपेंड ऑन यू, आपके ऊपर है, लेकिन ये श्योर आपने करना है। इसीलिए when you are going to communicate, and what is the purpose of communication is important. अगर आप क्लास में कर रहे हैं, 60 स्टूडेंट हैं, तो 30 पॉइंट इज सफिशिएंट। So 25 can be your font size and 30 size can be your heading size. So ma'am, I think it's 3:45. सर आपका वॉइस कट रहा है, एक आप लिख लीजिए, बॉक्स में लिख दीजिए प्लीज, चैट बॉक्स में डालिए सर, प्लीज राइट इन चैट बॉक्स सर। सर प्लीज मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू मेक वीडियो इन योर चैनल। अच्छा वीडियो कैसे बनाए, अच्छा हाउ टू एडिट वीडियोस,
that you want to ask how to shoot video, how to edit video, how to give voice over. Okay, I will do that. That is a very nice idea. I will share. Sir, Satish sir, you were asking, na? Yeah, sir. Something if you want. हाँ should doubt clear be during speech or end? Yes, very good question. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा सर ने. Right, in generally in seminars you will see scientific platforms where good seminars, you will see they will give 10 minutes for a speaker. For example, 10 minutes the speaker. So at that time, if you have any doubt, na, we should always restrain ourselves. These 10 minutes are of a speaker. Let him speak for 10 minutes. After that only we should speak. आपने बहुत बार देखा होगा, मैं कभी-कभी सेमिनार्स में भी देखता हूँ स्टूडेंट्स के, जैसे स्टूडेंट अपनी स्लाइड में गया, सेकंड स्लाइड में गया, वहीं पर कभी-कभी फैकल्टी रोक देते हैं, अरे रुको रुको रुको, ये कैसे हो गया भाई, ये कहाँ से हो गया, ये क्यों हो गया, बस ऐसे पूछना शुरू कर देते हैं. This is not a way, it is not a good practice to do. Generally, if you are giving 10 minutes to a speaker, let him speak for 10 minutes and then you note it down. अच्छे listener, that's why listening is also an art. Listening is very important and nowadays people don't want to listen. सुनना ही नहीं चाहते. ठीक है, तो सुनना चाहिए, वहां पर नोट कर लेना चाहिए और रेफरेंसेस में जब खत्म हो जाए तब उनसे पूछना चाहिए आपने वहां पर ऐसा दिखाया था, मैं ये पूछना चाहता हूँ. Confusion, go to back to that slide. वहां जाके पूछ लीजिए, वहां पर कंफ्यूजन दूर कर लीजिए. This is the good way, ethical way to do this, handle this. We should not disturb the Thank you. person, क्योंकि लाइट उड़ जाती है ना. Because speaker जब बोलता है तो words are framing in our mind and then they are coming, है ना, so that whole rhythm get disturbed. So Dr. Pragya ma'am, I think 3:49 is the time. Yes, Dr. Sabha. Yeah. I think it is now finished. If there is any more question, you can ask in the group. We will transfer to Dr. Sabha because Sure, otherwise ma'am. it's never ending. Okay. So it's really very wonderful lecture, and I think all of get benefited so much from your lecture, as well as they will also subscribe your YouTube channel because Thank you I've so much, also ma'am. I have seen a lot of time you in the Pusa Samachar. Actually, I am seeing you today. पूसा समाचार एक बहुत अच्छा हमारा इनिशिएटिव है, डॉक्टर सर की गाइडेंस में चल रहा है एंड एवरी ईयर इट्स अ चैलेंज, ह्यूज चैलेंज फॉर ऑल ऑफ अस. हमारी टीम के लिए एक्सटेंशन से जो हम लोग जुड़े हैं उसमें लीड कर रहे हैं कि हर वीक में एक 20 मिनट्स का वीडियो प्रोड्यूस करना है, दैट टू वेरी रेलेवेंट टू द फार्मर्स. समसामयिक आता है उसमें, आप देखिएगा, फॉलो कीजिएगा, आप लोग भी अपने किसानों को दीजिएगा उधर जो आपके टच में है. तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि इस वीक पे जो जाएगा वो उस समय जरूरत हो किसान को. तो हमारा वीडियो शूट भी होता है, पूरा इन हाउस है, साइंटिस्ट ही उसका वीडियो शूट करते हैं, हमारी टीम है, टेक्निकल्स के साथ हमारा पूरा टीम है, हमारी टीम उसको एडिट करती है, हम ही लोग उसको एंकर करते हैं, पूरा इनबिल्ट इन हाउस प्रोग्राम है पूरा. Even IRI have a good multimedia lab itself. Yes ma'am, we have a very good multimedia lab. Whenever you got chance, participants do visit IRI and you get because this is the upcoming area and Yes. IRI most of the means good students have started their own YouTube channels. Yes, and yes, ma'am. they are getting good response as well. So it's wonderful talking to you, Doksa, and Thank you, ma'am. we will remain connected in future too. So Sure ma'am, sure. thank you very much, sir. Yeah, and I also thanks Dr. Pragya ma'am for giving me this wonderful opportunity and all the participants for patient listening. आपने बहुत ध्यान से सुना, participate किया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ बात करके. ऐसे ही जुड़े रहिए. So it's a platform where now we have been connected for a whole life. So you can always be in touch with us in IRI, and whenever you visit IRI, do visit our department and we will show you our video lab and other facilities also. So thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Doctor. Thank you. Okay. So with this, this session is over and we will join tomorrow at 11 o'clock. Okay. Thank you. And I will share the PPT in the group, PDF of the PPT in the group itself. Okay. Thank you very much.